Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as we all know, daily at 11 a.m. from Sunday to Thursday in the morning, we come up with the Hindu analysis. आज 11 जनवरी है, so today is 11th January and we are here with the Hindu analysis of 11th January. I'll be discussing in both English as well as in Hindi language, so do not bother. मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में डिस्कस करूंगा. Okay. So let's start with today's the Hindu newspaper. Today is Wednesday. आज Wednesday है, 11th January है, and I'll be discussing Delhi edition. But yes, more or less it will be same in other cities as well. Okay. So if I'm audible, just write in the comments. Yes sir, you're audible. अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप एक बार comment section में लिख दो कि yes sir, you're audible. Now we are discussing a very important article. So the two articles are very important on the first page. The first, here it is, anti-government protest in Peru claims at least 17 lives. This is very important. Yesterday we had discussed about Brazil, the protest in Brazil and all. So that is also very important. And today we will be discussing about Peru actually protest, anti-government protest. ठीक है? तो कल हम लोगों ने देखा था कल के अखबार में कि ब्राजील में प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, उसके कारण वगैरह सब कुछ हम लोग जाने थे. आज जो हम लोग जानेंगे और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इसलिए कि 17 लोगों की मौत भी होगी. वो पेरू में, ब्राजील के ही पास में एक कंट्री है, साउथ अमेरिका में पड़ता है. सो पेरू एंड ब्राजील बोथ आर एक्चुअली इन साउथ अमेरिका. आई विल बी शोइंग इन द मैप. ठीक है. नाउ एक और ये वाली आर्टिकल है, वी वोंट पे अ फार्थिंग मोर सेज यूनियन कार्बाइड. सो दिस इज रिलेटेड विद भोपाल गैस ट्रेजेडी. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस एज वेल. ये वाला जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड है, तो इसको भी हम लोग जानेंगे. ओके. So let's start without wasting the time. Before that, yes, जो ये वाला है यानी ब्राजील से related issue है, we had discussed in last class on 10th January. So please go and watch yesterday's session of 10th January. We had discussed in detail about the protest in Brazil. The elections recently happened. The new president has been appointed and all. So that is also very important. तो कल के अखबार में द हिंदू एनालिसिस में हम लोग ब्राजील के बारे में जाने थे, उसको पढ़िए जाके. Now let's talk about this. Anti-government protest in Peru claims at least 17 lives. At least 17 people died in Peru as protesters trying to storm an airport clashed with security forces and latest violent spasm of a month-old political crisis. Now, this new chapter of bloodshed happened in Julaica in the Puno region. So, Julaica is a city in Puno region where actually this clashes have happened or anti-government protesters have become violent. तो पूनो रीजन है, जोलाइका शहर है, वहां ये हुआ है. तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं. देखो, so it says, let me first tell you where exactly it is, then you will understand. So here is India. यहाँ पर इंडिया है. This is South America continent, right? ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है. ये वाला ब्राजील है और ये वाला पेरू है. ओके. So you can see it here. So this country is Brazil, which we had discussed in yesterday's class. और ये वाला पेरू है. Okay. Can anyone tell me in the live chat what is the capital of Peru? कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है पेरू की? I have taught in the paid classes, so those who are my paid batch student must be aware of it. ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाया है पेड क्लासेस में अभी few days back. Now, so this is Peru and the capital city of Peru is Lima. ठीक है, ये इसकी कैपिटल है, राजधानी है. ठीक है. अब देखो यहां पर साउथ ईस्ट में देखो लिखा ना है कि द क्लैशेस हैव हैपेंड इन द साउथ ईस्टर्न सिटी ऑफ जुलाइका इन पूनो रीजन. इस रीजन को पूनो रीजन वो लोग बताते हैं. ठीक है, यहां पे कहीं पे पूनो रीजन इन पेरू. एंड वहां पर एक जगह है जुलाइका वेयर एक्चुअली दिस एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट became violent and it almost led to the death of 17 people. 17 लोगों की मौत हो गई यहाँ पूनो रीजन में, जुलाइका एक जगह है. अब देखो यहाँ पर एक बहुत फेमस लेक है. इट्स अ वेरी फेमस लेक. देख रहे हो यहाँ पे ऑन द बॉर्डर ऑफ बोलिविया एंड पेरू. दैट्स कॉल्ड एज लेक टिटिका. काफी फेमस है ये. एंड गो एंड फाइंड आउट टिटिकाका. हाँ, लेक टिटिकाका. गो एंड फाइंड आउट व्हाई लेक टिटिकाका इज सो फेमस. ठीक है, इसको पढ़िएगा जाके कि क्यों लेक टिटिकाका इतना ज्यादा फेमस है. ओके. यस. सो अब हुआ क्या है और हमको जाना है. देखो, इफ यू आर माय पेड बैच स्टूडेंट यू मस्ट नाउ बी अवेयर ऑफ इट टिल नाउ. आपको पता होना चाहिए कि क्या है एक्चुअली माजरा. सो पेड्रो कैस्टिलो एक्चुअली ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पेरू एंड ही वाज इम्पीच्ड
What is the meaning of impeached? Can anyone write in the comment? So on 7th December 2022, he was impeached by the parliament. Impeached by the parliament of Peru, it means he was removed by the parliament. Okay, उनको पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट हटा दिया था पिछले महीने दिसंबर में. ओके, यस. नाउ उसके बाद इनकी वाइस प्रेसिडेंट जो थी दीना बोलोटो, हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट, व्हाटएवर यू कैन से, शी बिकेम द प्रेसिडेंट. सो यू कैन सी इट हियर. उसके बाद जब ये हटे 7 दिसंबर को, तो वो उनकी जो डेप्यूटी थी या वाइस प्रेसिडेंट थी वो प्रेसिडेंट बन गई. ओके, सो टिल नाउ इट्स क्लियर. यस. नाउ तो जैसे ही तो देखो, यू कैन सी इट हियर, व्हाई वाज पेरू's प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो impeached and all, so there were in the news, and he was replaced by his deputy Dina Boluarte. Okay, yes. तो जब उनको हटाया गया ना, he attempted to dissolve the Congress, or what we call it as the self coup attempt. Self coup attempt means when he was removed by the parliament, he tried to in fact dissolve the parliament and to so that to ensure कि he should remain as the president. उन्होंने कोशिश ये की कि अगर पार्लियामेंट हमको हटा रही तो हम पार्लियामेंट ही बंद कर देते हैं, पार्लियामेंट ही को डिसॉल्व कर देते हैं और हम खुद इलेक्शन प्रेसिडेंट रहते हैं. इसको कहते हैं सेल्फ कू अटेम्प्ट. ठीक है, 2022 सेल्फ कू अटेम्प्ट ऑफ पेरुवियन लीडर और पेरुवियन प्रेसिडेंट, अगेन 7 दिसंबर 2022. तो हार्डली 1 मंथ बैक की बात है. ठीक है. पेरू's करेंसी इज सोल. सुरेंद्र, वेरी गुड. हाँ, सो पेरू की जो करेंसी है वो सोल है, पेरुवियन सोल वी कॉल, एंड कैपिटल इज लीमा. ठीक है, तो पता होना चाहिए सब. ओके, यस. तो यही हो गया. तो उन्होंने चाहा सेल्फ कू करके कि हम जो है प्रेसिडेंट रह जाएं, बट ऐसा हो नहीं पाया, एंड ही हैड टू, ही वाज इन फैक्ट अरेस्टेड एज वेल, है ना. तो ही वाज अरेस्टेड एंड द वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पेरू. ठीक है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट की लेडी है ये प्रेसिडेंट बन गई. नाउ द प्रोटेस्टर्स आर प्रोटेस्टिंग दैट शी शुड रिजाइन एंड न्यू इलेक्शंस शुड हैपन. ठीक है, तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका मेन मकसद है प्रोटेस्ट का ये है कि दीना बोलोटो को रिजाइन कर देना चाहिए और नया चुनाव होना चाहिए. ओके, ठीक है. सो दैट इज व्हाई द प्रोटेस्टर्स आर प्रोटेस्टिंग. यू कैन सी लाइक अदर have for the past, you can say, and all, President Dina Boluarte took over the charge after the resignation or arrest and ouster of President Pedro Castillo, and Pedro Castillo tried to dissolve the Congress, but he was arrested and all. And protesters want even Dina Boluarte to resign and elections right way. ठीक है, तो ये तो इनको रिजाइन, इनको इम्पीचमेंट हो गया, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट बन गई. ठीक है, लेकिन प्रोटेस्टर्स कह रहे कि नहीं, आप भी रिजाइन कीजिए और चुनाव करवाइए, न्यू इलेक्शंस शुड हैपन. दैट इज व्हाट द प्रोटेस्ट इज ऑल अबाउट. ओके, दैट द वाइस प्रेसिडेंट शुड आल्सो रिजाइन एंड वाइस प्रेसिडेंट हु बिकेम द प्रेसिडेंट should also resign and there should be a new elections. And in that protest actually 17 people till now have died. आप देख सकते हो कई बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, जैसे पूनो रीजन में. आई हैव टोल्ड यू पूनो रीजन इज इन दिस रीजन, यहाँ पे है पूनो, साउथ ईस्ट रीजन ऑफ पेरू. So here is Puno region. Okay, yes. Titicaca is one of the largest freshwater lake in South America. Yes, हाँ Surendra, right, हाँ. And the highest as well, right? Highest navigable lake. Correct, Surendra. Very good. Lake Titicaca काफी famous है, आपको पता होना चाहिए. So is it clear, guys? Peru clear हो गया? I think hopefully it's crystal clear. Now there is another article जो first page में ही थी. We won't pay a farthing more, says Union Carbide. Now this is related with Bhopal gas tragedy. How many of you are aware of this Bhopal gas tragedy? ये क्या था? देखो मैं बताता हूँ. Okay, so first of all let me show you where exactly is Bhopal. So this is मध्य प्रदेश of India. ये मध्य प्रदेश है, उसमें एक जगह है यहाँ पर भोपाल. Okay, and I hope you are aware, capital of Madhya Pradesh. Yes. Now, so here on 2nd and 3rd December 1984. Gas got leaked. What is the name of the gas? So the name of the gas is methyl isocyanate. ये पूछते हैं कई बार एग्जाम में. It got released and because of which it's killed more than 2000 people. 2000 से ज्यादा लोगों की, शायद उससे ज्यादा लोगों की भी मौत हो गई. And later people say कि नहीं, maybe in fact it is more than 3000 or 4000 maybe. तो इतने सारे लोगों की मौत हो गई. And the plant was of Union Carbide India Limited. So this actually had to pay compensation. तो उन लोगों ने कंपनसेशन दिया भी. ओके, बट नाउ द गवर्नमेंट इज डिमांडिंग मोर कंपनसेशन फ्रॉम देम. ओके, सो द यूनियन कार्बाइड on Tuesday said it is not willing to pay a farthing more of a settlement with the center in 1989 said by the Supreme Court. Okay,
And the constitution was asked why 50 crore of the 470 million paid by the company has not still reached the Bhopal gas tragedy and all. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए और एक्चुअली कंपनसेशन मांग रही है कि दैट यूनियन कार्बाइड शुड बी पेइंग मोर कंपनसेशन. एंड सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग यू आर आस्किंग दिस आफ्टर ऑलमोस्ट, so this incident happened 1989, you are asking almost after more than 30 years, I would say 33 years it's now, है ना. तो अब 32 साल 33 साल बाद और जो है ये मांग रहे क्या कहते हैं कंपनसेशन मांग रहे, ये सही नहीं है. सेंटर इन a curative plea has attended that 1989 settlement is seriously impaired. It has sought additional fund of 7,400 crore. तो 7,400 करोड़ रुपया और यूनियन कार्बाइड को देना चाहिए, जो कि प्लांट थी, जो कि कंपनी थी जिसकी वजह से गैस लीक हुआ, ताकि हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम को दे सके. ओके, सो दैट इज व्हाट इट सेज. बट द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड व्हाई 50 करोड़ ऑफ द 470 मिलियन डॉलर पेड बाय द कंपनी हैज स्टिल नॉट रीच्ड द भोपाल गैस ट्रेजेडी विक्टिम. तो पहले भी 470 मिलियन डॉलर दे चुकी थी भोपाल यूनियन कार्बाइड ने, उसमें से अभी भी 50 करोड़ जो है विक्टिम तक पहुंचा नहीं है. तो बेसिकली द सुप्रीम कोर्ट इज आस्किंग द गवर्नमेंट फर्स्ट पे व्हाटएवर इज लेफ्ट. देखो ना, 470 मिलियन डॉलर 715 करोड़ के आसपास होता है, ठीक है. सो यूनियन कार्बाइड हैड पेड 715 करोड़ इन द पास्ट एज अ फाइन और एज अ कंपनसेशन, बट 50 करोड़ इज स्टिल येट टू गेट टू द विक्टिम्स, ठीक है. तो 715 करोड़ में से 50 करोड़ अभी भी विक्टिम्स तक पहुंचा नहीं है, ठीक है. देखो यहाँ पे 5295 यानी 5295 डेथ्स दिखा रहा है, ठीक है. 5,68,000 इंजरीज है. ओके, and it gave 715 crore as a compensation in 1989 as well, ठीक है. So 715 करोड़ compensation भी दे चुका है. Okay, yes, so that is what it is saying. So Supreme Court actually additional compensation इतना exactly इतना मांग रहे थे, 7,844 करोड़. So the government was demanding 7,844 crore more from the Union Carbide firm, but the Supreme Court is, I think, not willing to accept this demand, ठीक है. तो that is about Union Carbide Limited. तो इसमें कुछ चीजें पूछी जा सकती है, जैसे पूछेंगे ये कि what is the name of the gas, ये पूछा जाता है, methyl isocyanide gas. Now because of this 2nd December 1984, sorry, it's not 1989, I mistakenly said 1989. 2nd December 1984, the Bhopal gas tragedy happened, and that is why 2nd December every year is observed as which day? There's a homework. 2nd December को कोई दिन बनाया जाता है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे करके मनाया जाता है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे. Why? To remember Bhopal gas tragedy. Okay, so just have an idea about it. ठीक है. Okay. Now let's move on further. Supreme Court to hear Joshimath crisis on 16th January. So Joshimath से related issue 16 जनवरी को Supreme Court hear करेंगे. Now I hope you are aware of Joshimath. The cracks have developed in the houses and all in Uttarakhand, and for that we discussed day before yesterday, 9th January के session में. On 9th January the Hindu analysis, I have discussed it. If you have not watched it, please go and watch it. जाके उसको देखें. It will be very very important. And there is a request, guys, everyone please press the like button. We are seeing 8 likes, 16 is watching, so सबको like button press कर दो फटाफट. Yes, so these things we have discussed. देखो houses में cracks हैं, देख रहे हो ये सब, घर में cracks आ गए. We are talking about this Joshimath and all. So that is why it was in the news. Now yes, everyone please subscribe to our channel as well. नीचे subscribe का button होगा, subscribe कर दो and press the like button also. We are seeing 8 likes only, 17 is watching, so सबको like button press कर दो. Okay, now this is a course for you. If you want to secure a dream NLU, then you can go for this course. 300 plus recorded videos, 300 plus hours of live session, 35 mock tests, monthly magazines would be there. And if you have any query related to this course, you can call on this number 9538895678. अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है. Now, so this is actually from our one year online classroom program. She is Anika Sehgal. She got 18th rank in AILET. In fact, she got good rank, even double digit rank in CLAT as well. So next time there will be your photo here. Okay. Okay. Now let's talk about editorials. So here is these are the two editorials written by authors. ना तो यहाँ पर नाम लिखा रहता है ना author का. And these are actually authorless articles. So it represents the opinion of the Hindu editors. I have told you many times. Now let's talk about these two. So Russia, lessons from Russia's Ukraine war.
So it's written by Stanley Johnny. So he is actually talking about some past and all. He is referring to Winston Churchill, who was the president or prime minister of England in Second World War and all. So you are not supposed to go in detail. Just have an idea. There is still a lack of clarity and uncertainty or Russia's objective in Ukraine that it will do next to them and all. मतलब ये बताया जा रहा है कि अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि रशिया चाहता क्या है. Means there is no clarity and uncertainty. I hope you are aware that Russia last year started attacking Ukraine and all from here and all. So the reason was because of Donbass region. Donbass is a region in Ukraine. This is the main reason why Russia actually attacked Ukraine. But still, the author is saying कि अभी भी पूरी तरह clarity नहीं कि what is its objective. कब तक इस तरह लड़ाई चलती रहेगी? So actually neither Ukraine has completely won nor Russia has won. So the fighting is still happening. तो कब तक ये गोली बम चलता रहेगा, इतने लोग मरते रहेंगे and all. Still there is lack of clarity. He then offered to talk even as missiles kept on pounding Ukraine. तो ये लिख रहे हैं कि Vladimir Putin, the president, actually, let's say Ukraine president Vladimir Zelensky went to Belarus and Putin came and they talked. So talks also happened, but at the same time Russia was bombarding Ukraine. बात हो भी रही थी तो भी रशिया जो यूक्रेन पर बम गिरा रहा था. So that is what he's talking about. Okay. Yes. After the disintegration of Soviet Union, the US had established a de facto unilateral hierarchy. Okay. There's a question for you. ये पूछा था CLAT 2022 में last year. Before 1991, Ukraine was a part of what? USA, European Union, NATO, USSR. बहुत आसान question है. I'm waiting for your answers, guys. And everyone, please press the like button. सबको like button press करते जाओ. We are seeing 20 live watching, 14 likes, so सबको 20 plus likes कर दो. So 1991 से पहले यूक्रेन जो यूएसएसआर का पार्ट था, जिसको हम लोग सोवियत यूनियन कहते हैं. दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन क्लैट, है ना? यस, सुरेंद्र, राइट, इट इज द राइट आंसर. तो ये यूएसएसआर है ना? एंड दिस इज यूक्रेन. ठीक है. सो ये सारा यूएसएसआर का पार्ट था, बट 1991 यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड, सो वी आर लेफ्ट विद रशिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन एंड ऑल डिफरेंट कंट्रीज, है ना? तो ये क्वेश्चन भी आया था, है ना? Yes, Azad, Netaji, Atika, Teju, Aditi, Zoya, Surendra, you all are right, is the right answer. तो ये बता रहे हैं कि जब when Soviet Union got disintegrated, जब Soviet Union टूट गया, USA had established a de facto unilateral hierarchy. But you can say the world became unipolar, है ना? There before this there were two superpowers, USSR and USA. But after 1991 we are left with only one, that is USA. ठीक है. American wars in the Muslim world did not proceed as Washington had expected. As US got stuck in Afghanistan and Iraq, Russia became more aggressive, Iran more defiant and China more powerful and all. ठीक है. ठीक है. तो अमेरिका जैसा चाहता था कि मुस्लिम वर्ल्ड में जंग लड़े, वैसा हो नहीं पाया. Yes. So America actually waged war in Iraq, in Afghanistan, etc. But it did not gain much traction. बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ ना. In fact, after 20 years, America had to leave. In fact, in Iran, America could not establish its hegemony. Similarly, इसी तरह जैसे कि वियतनाम में भी, है ना, US intervention in Vietnam, its invasion of Afghanistan. So if you are aware of that, कि USA actually invaded Vietnam. Here is Vietnam, ये वाला. From 1955 to 75, 20 साल तक it tried to have actually hold in Vietnam, but in 1975 it had to leave. Similarly, in Afghanistan, from 2001 to 2021, it tried to have a hold in Afghanistan, but it had to leave. So दोनों जगह वियतनाम में भी और अफगानिस्तान में भी 20-20 साल रह करके भी वापस जाना पड़ा. So that is what the author is discussing here. Okay? Yes. When Putin ordered his military operations, it is possible that he expected quick result, but he miscalculated the power of Ukrainian nationalism. तो जब पुतिन ने भी अटैक किया तो यही सोच किया होगा कि हम लोग हरा देंगे आसानी से, लेकिन वो मिसकैलकुलेट करके कि यूक्रेन इतना भी कमजोर या वहां की नेशनलिज्म इतनी भी कमजोर नहीं है. सो दे फॉट एंड स्टिल सो एक्चुअली रशिया इज अनेबल टू कंप्लीटली डिफीट यूक्रेन. तो अभी भी यूक्रेन को पूरी तरह नहीं हरा पा रहा. अब आप समझ रहे हो, ये कहना चाह रहे हैं कि जो सुपर पावर्स लाइक रशिया एंड यूएसए आर नॉट सो पावरफुल दैट दे कैन एक्चुअली कैप्चर अ कंट्री फॉर मेनी इयर्स. जैसे it tried in US, Afghanistan and Vietnam, but it was not very successful. ठीक है. Similarly, Russia is attempting in Ukraine attacking, but still Russia is unable to win the complete war. पूरी तरह नहीं जीत पा रहे. ठीक है.
So that is what it is. What does the war hold for China? The dragon in the room. There were enhanced tension between US and China and all. हाँ, अब देखो ये बात कर रहे हैं. I hope you are aware. Last year, देखो, here is China. This is Taiwan, and China believes that it is their part. But USA actually is trying to have good relations with Taiwan, and USA says that if China is touching Taiwan, then I'm here to protect. अगर चाइना ने ताइवान को कुछ किया तो हम हैं यहाँ पर, ठीक है. In fact, last year, the US Speaker of House of Representatives, है ना, her name was Nancy Pelosi. She visited there, है ना, she visited Taiwan, and because of which actually the China became angry and all. ठीक है. So उसी की बात यहाँ पर कह रहे हैं कि Nancy Pelosi visited Taiwan and all. And then China started doing military drills in this region. तो यहाँ पर military drills China करने लगा. Yes, okay. Okay, everyone, guys, please press the like button. We are seeing 15 likes, 22 is watching. So सबको like button press कर दो. Everyone. Now, there's a side article which talks about governor's departure from convention was set off unsavory events. Expectation. देखो, ये मैंने discuss किया yesterday's class में that the Tamil Nadu governor Mr. R.N. Ravi actually left the legislative assembly. Mr. R.N. Ravi ने legislative assembly बीच में ही छोड़ दिया in the governor's speech because of some reason I have discussed here. तो कल की क्लास में मैंने इसको discuss किया है where actually he was reading a passage. Actually, he was supposed to address the legislative assembly. And because of some reason, he skipped some portion, which was not liked by the chief minister and the state government, and because of which he left it. Okay. So the constitutional convention says that the president or governor should not depart from the text. जो text उनको दिया गया है. So the government or the council of minister has given some text. They should not depart from it. They should read what is actually given to them. Okay. Because this is actually the democracy is there. I mean, the chief minister is elected person. तो जनरली ये बिलीव किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जनरली ये है, यानी प्रैक्टिस ये चली आ रही है कि जो गवर्नर को या प्रेसिडेंट को दिया जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, उसी को वो पढ़े पूरा गवर्नर्स एड्रेस में. ठीक है, अगर वो डिसएग्री करते हो तो भी. सो दैट इज व्हाट द ऑथर सेज. सो बेसिकली द हिंदू एडिटर्स आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु मिस्टर R.N. Ravi. तो ये क्रिटिकल आर्टिकल है, critical to the governor and all. There's no reason why a deviation from convention on governor's part should not be met with an immediate response and all. तो ये इसमें लिखा होता. Okay, is it clear? Is it clear, guys? Yes. Before moving on, guys, there's a small announcement. I will be having a free workshop, Key Learnings from CLAT 2023 on 15th January at 7 PM with Nivedita ma'am. So the link is given in description. नीचे description में link दिया हुआ है, उस पर click करके you can register it. ठीक है. Subscribe to our channel and press the bell icon also and press the like button as well. तो सबको like button press कर दो. We are seeing 15 likes, 23 is watching. So सबको like button press कर दो. Now the next is the beginning of India's cultural renaissance और ये है the riot of losers. तो पहले ये जानते हैं this is actually written by Mr. Piyush Goyal, the Commerce Minister of India and Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution as well as Textile Ministry. So he's having 3 ministries in his hand. ठीक है, तो एक Commerce Ministry है, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी इनके पास है. ठीक है. कल्चरल रेनेसा, रेनेसा में समझते हो ना, रीबर्थ. ठीक है. ओके, सो ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द कल्चरल रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. तो है ना कि देखो इंडिया इज अ टारगेट. सो राइट नाउ वी आर इन 2023. आवर टारगेट इज बाय 2047 इंडिया शुड बिकम डेवलप्ड. ये टारगेट है कि 2047 तक इंडिया डेवलप्ड नेशन बन जाए. So when we will be celebrating 100 years of independence, जब हम लोग 100 साल मना रहे होंगे इंडिपेंडेंस के. ठीक है. And this there's a scheme also to protect the culture and all. एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम. ठीक है. Okay, yes. हाँ, ये वाला ऐप पर होगा. Yes, Aditi. This will be session will happen in app. So download the BYJU'S exam prep app and there will be a session. ठीक है. Okay, now he is giving different examples like काशी. काशी बनारस में, वाराणसी में. It's a religious place, है ना, one of the oldest living cities in the world. And Tamil Nadu is also famous for rich heritage, religious heritage and all, है ना. So उसी की वो बात कर रहे हैं. So different arts, music, craftsmanship, philosophy, spirituality, literature and all. That is what he is talking about. Kashi Vishwanath temple is there in Banaras, very famous one.
देन ही सेइंग कि रिसेंटली टेक्सटाइल कनक्लेव एक्चुअली हैपेंड एंड दैट्स कॉल्ड एज संगमम, ठीक है। तो ये यही था दिसंबर में 2-day टेक्सटाइल कनक्लेव हैपेंड with an aim to encourage artisan, local artisan, तो local handicraft को promote करने के लिए, local handicraft या textile समझते हो ना, local कपड़ा बनाने के लिए जो होता है ना, हाँ local people जो बनाते हैं, Indian indigenous, not imported ones। तो because he is a textile minister as well, क्योंकि वो टेक्सटाइल मंत्री भी है, तो इसीलिए उन्होंने ये भी किया। टेक्सटाइल कॉन्क्लेव हुआ था संगमम में, ठीक है। संगमम उसका नाम है, उस जो कॉन्क्लेव जो हुआ था उसमें, एंड एक्चुअली देयर वर डिस्कशन about how to promote local textile in India, ठीक है। So just have an idea about it. Several eminent personalities of different segments gathered from Tamil Nadu to Kashi, है ना। तो कई सारे लोग वहां आए थे, तमिलनाडु से लेके बनारस तक, मतलब कई तरह के लोग आए थे, कई तरह की बातें हुई। अब देखो अमृत काल विजन, नाउ आई होप यू आर अवेयर, फ्रॉम 2022 to 2047 is called as the next 25 years is called as अमृत काल, है ना, ठीक है। So just have an idea about it. Okay, then he is talking about the Sangamam Sangamam वही जो textile conclave हुआ, so the was in step with the entire spectrum of the government's policy, and these policies accord top priority to accelerating development with a focus on welfare of poor, है ना। So local artisan or local textile needs to be developed, so this will help poor people especially, है ना, जो गरीब लोग हैं, जो छोटे लेवल के व्यापारी या बिजनेसमैन है, लोकल टेक्सटाइल स्टार्ट किया, है ना। We are strongly promoting one district one product scheme, ODOP, है ना, that will take Indian products to the world market, ठीक है। So one district one product scheme is actually, it was actually originally started by UP government। one district one product में कि एक जिला में एक प्रोडक्ट को खूब प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, सो अलीगढ़ इज द सिटी इन यूपी फेमस फॉर इट्स लॉक्स, ताला बनाने के लिए फेमस है, ठीक है। सो सिमिलरली लेट्स से मिर्जापुर इज फेमस फॉर कारपेट, आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल्स। एक जिला में एक चीज को, जैसे there is a city in UP called as Firozabad, I think it is famous for bangles, चूड़ी बनाने के लिए। So this is how the idea is, one district one product, यानी कई बार होता है ना, एक शहर किसी एक प्रोडक्ट के लिए काफी फेमस होता है, तो वो आइडिया होता है one district one product का, ठीक है। So the idea was actually started by UP government, now I think it is spread in the entire India and all। Apart from sarees, textile conclaves also dwelled on wooden toys and all, है ना। तो वुडन टॉयज यानी लकड़ी का टॉय इंडिया में बनाया जाए, वी शुड नॉट बी इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना और सम अदर रीजन, रादर वी शुड बी मेकिंग इन आवर ओन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग टू अदर नेशंस, है ना। यानी अपनी कंट्री में बनाए, उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे और दूसरी जगह सेल करे, है ना। मिर्जापुर इज फेमस फॉर सीरीज, हाँ दैट इज डिफरेंट, हाँ यस। तो दैट इज द आइडिया अबाउट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओके। नाउ सेकेंड हाफ में राइट ऑफ लूजर्स, ये बोल्सोनारो की आर्टिकल देखो, मैंने डिस्कस करा था, ये वाला है ना, second half का left side वाला। Now we have already discussed it, so I am not going in detail. I have told you that in this class, yesterday's 10th January class, that recently the elections happened in Brazil। देखो ये मेरा session है 10th January का। So Lula da Silva and Jair Bolsonaro, they fought the elections, he became the ex-president, है ना। देखो 31st December को he lost the election, I mean from 1st January he became the president of Brazil, ठीक है। अब उसमें हुआ यह क्या कि his actually supporters stormed the parliament of Brazil and Supreme Court and all, government buildings में तोड़फोड़ मचाने लगे and all। So we have discussed in detail in yesterday's class, 10th January क्लास में हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। So please go and watch it, press the like button and subscribe to our channel as well, ठीक है। तो इसी के बारे में ये डिस्कस किया कर रहे हैं and all, ठीक है। And the author is talking about, it is very similar to the incident that happened, riots happened in US Capitol Hill by Donald Trump supporter and all। तो ये भी मैंने डिस्कस किया है, कैपिटल हिल का भी प्रोटेस्ट यहाँ डिस्कस किया है 10 जनवरी में। So please go and watch this, है ना। Okay, now let's talk about this op-ed piece में आर्टिकल barking up the wrong tree, let's talk about that। Is it buffering guys or is it fine? Azad Netaji, please refresh from your side, I think it's fine। हाँ देखो अब इसमें क्या है कि इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस्ड इट्स इंटेंशन बाय इंट्रोड्यूसिंग रिमोट वोटिंग अक्रॉस द कंट्री। देखो अब क्या नहीं, रिमोट वोटिंग की बात कर रहे हैं, है ना। एंड ईसीआई हैज सेड दैट इट विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रोटोटाइप ऑफ आरवीएम रिमोट वोटिंग मशीन, ठीक है, ऑन 16 जनवरी को। 16 जनवरी को जो है वो इलेक्शन कमीशन इसको डेमोन्स्ट्रेट भी करेगी कि कैसे पॉसिबल। अब क्या होता है रिमोट वोटिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, let's say you are from New Delhi, आप दिल्ली में रहते हो, मींस you belong to Delhi,
but for job purpose you are living in Bangalore. Yeah, let's say you are living in Delhi and you got selected in Bangalore, in LSUI Bangalore, and you are studying here. Okay. Now you want to go vote. Elections is happening in Delhi and you want to vote. So you have to go back to Delhi to vote, just to vote. अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो, बैंगलोर में रह रहे हो, जॉब नौकरी कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, अगर आपको दिल्ली में वोट देने के लिए दोबारा जाना पड़ेगा. So now the idea of RVM, remote voting machine, is let's say you belong to Delhi, but if you are living in Bangalore, from Bangalore you can vote for Delhi. आप बेंगलुरु में बैठे बैठे दिल्ली के लिए वोट कर सकते हो, है ना. क्योंकि आजकल ऑनलाइन जमाना है, तो आप घर बैठे सारा काम, वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, सब कुछ तो हो ही रहा है. So why not voting? Voting can also happen remotely. Yes, है ना. तो वोटिंग भी आप घर बैठे कर सकते हो. You don't need to come back to New Delhi or your hometown to vote. तो आपको hometown आने की जरूरत नहीं. So that is what the idea is, remote voting. But इन्होंने लिखा है, the author has written that the things still, I think you can say कि अभी पूरी चीज adequate नहीं. We do not have, according to the author, कि remote voting machine is not adequate to actually successfully implement it. उनके हिसाब से अभी भी ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होना मुश्किल थोड़ा सा लग रहा है. ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है. देन ही इज आल्सो टॉकिंग अबाउट वीवीपैट मशीन. ये कौन कौन लोग जानते हैं वीवीपैट मशीन? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? आई थिंक आप लोग शायद वोट नहीं किए होंगे बिकॉज यू आर माइट बी लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज, बट दिस इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. तो ये वाला जो होता है ना, यही होता है इसमें, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. यस, इसी में ना, सो जो ब्लू वाला होता है ये सब बटन होता है. तो दीज आर द बटन्स, ये लाइट जलती है. जैसे यहाँ पर ये सिंबल है, मान लीजिए आपकी पार्टी का सिंबल के है, ऐसे लिखा हुआ है. ठीक है, नाउ यू वोटेड फॉर दिस. तो जब आप यहाँ पे बटन दबाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका इंफॉर्मेशन चला जाएगा, इस बंदे ने के पार्टी को वोट किया. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. एंड हियर इट विल बी शोइंग, ये 7 सेकंड के लिए यहाँ पर लिखा है कि यू वोटेड फॉर के पार्टी फॉर 7 सेकंड्स. इट विल बी शोइंग, एक कागज आएगा, फिर ये अंदर चला जाएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ, इसको कहते हैं वीवीपैट मशीन, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन. लिखा है ना, देखो यहाँ लिखा है. So it verifies, it ensures कि हाँ आपने उसी पार्टी को वोट किया है. बिकॉज उसमें बहुत सारे एलिगेशंस भी लग रहे थे कि वोट कहीं और करे, जा रहा कहीं और. बहुत सारे लोगों ने कहा, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा चलो ठीक है ये लगा देते हैं आपके लिए. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज, है ना. वीवीपैट, go and find out the full form. Yes, someone has written. Yes, Surendra is right. Voter verifiable paper audit trial. Yes, that's VVPAT. इसको थोड़ा सा पढ़ लेना. Decriminalizing homosexuality but no same-sex marriage. So this was decriminalized by Supreme Court in which case? Can anyone tell me? कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया था होमोसेक्सुअलिटी को? But this actually there is still same-sex marriage is not recognized. The petitions have been filed in Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशन जरूर फाइल किया गया है कि सेम सेक्स मैरिज अलाउ किया जाए, लेकिन डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था 3-4 साल पहले, आई थिंक इन 2018. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट जजमेंट? प्लीज टेल मी. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. वी आर सीइंग 17 लाइक्स, 24 इज वाचिंग, सो सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ. तो गो एंड फाइंड आउट सब होमवर्क. नाउ एक और है DAC, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, एक्चुअली गिव नॉड. नॉड मतलब होता है परमिशन, से यस, परमिशन देना. परमिशन टू परचेज इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम. इंडिजिनस मतलब होता है मेड इन इंडिया, मतलब वी हैव नॉट इंपोर्टेड, मेड इन आवर ओन कंट्री. हाँ, सुरेंद्र इज राइट. नवतेज सिंह जौहर केस, नवतेज सिंह जौहर केस. ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा जाके. नवतेज सिंह जौहर केस. ठीक है, गो एंड रीड अबाउट इट. रीड अबाउट सेक्शन. अच्छा, कौन सा सेक्शन था उसमें ये भी पता करो. विच सेक्शन ऑफ IPC वाज रिलेटेड विद होमोसेक्सुअलिटी एंड ऑल, फाइंड आउट. ठीक है, तो इंडिजिनस इन मेड इन इंडिया, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज एक्चुअली गिवन अप्रूवल फॉर मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम परचेज, खरीदने के लिए. क्या क्या है भाई? तो देखो, हेलिना है, नाग हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है. ठीक है, एक ये. ओके, देन वशोराड, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम. फिर ब्रह्मोस मिसाइल, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये तीनों आप पढ़ना जाके, नाग मिसाइल, वशोराड and BrahMos. Go and read about it. कौन सी कंपनी बनाती है and all, क्या क्या है and all. So all these you should be reading it, है ना. Yes, section 377 of IPC is related with homosexuality. Very good, Zoya Khan. हाँ. Now एक और चीज we'll be discussing it is Indian diaspora, a unique force in the global system, says Murmu. So diaspora, she is actually referring to what?
नॉन रेसिडेंट इंडियंस है ना, या इंडियंस लिविंग अब्रॉड, एनआरआई जिसको हम लोग कहते हैं, इंडियंस लिविंग अब्रॉड, उसको हम लोग डायस्पोरा कहते हैं। ठीक है, अब देखो आई हैड डिस्कस्ड क्लास, मैंने एक रिकॉर्डिंग क्लास भी दिया है सेम यूट्यूब चैनल पर, जस्ट सर्च 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023 बायजूस क्लैट, इतना सर्च करना, ये वाला आपको सेशन मिल जाएगा on the same YouTube channel, इसी YouTube channel पर which you are watching. Please subscribe to our channel as well so that whenever we are putting a video you will get the notification, और bell icon भी दबा देना, ठीक है। And we are seeing 18 likes, 27 is watching, so सबको like button press कर दो guys, everyone, yes. So ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसे MHCT का एग्जाम हुआ, ठीक है, फिर स्लैट का एग्जाम हुआ, इसमें ये सब बहुत ज्यादा चांस है आने का, ठीक है, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, so you must, yes, 27 people got the award also, Pravasi Bharatiya Divas award. So there's a homework. Can you even tell me who was the chief guest here and who was the special guest of honor? इन दोनों का नाम कोई बता सकता है? I am waiting for the answers. कोई बता सकता है इसमें प्रवासी भारतीय दिवस में चीफ गेस्ट कौन थे इस साल और स्पेशल गेस्ट कौन थे? मैंने इस क्लास में डिस्कस किया है डिटेल में सारा, कि he is a president of that country, that country is in which continent, सब मैंने बताया है। I am waiting for the answers. I am giving you a few seconds. Please answer me. Who was the chief guest of प्रवासी भारतीय दिवस this time? नहीं, जोया खान, अब्दुल फत्ताह अल सीसी will be the chief guest in 26 जनवरी रिपब्लिक डे। 26 जनवरी 2023 को जो चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे अब्दुल फत्ताह अल सीसी, इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। I'm not talking about 26 January. I'm talking about प्रवासी भारतीय दिवस। मोहम्मद इरफान अली, yes, very good. हाँ, so मोहम्मद इरफान अली was the chief guest, और स्पेशल गेस्ट कौन थे उनका भी नाम पता करो, it is mentioned here, ठीक है। And please find out कि मोहम्मद इरफान अली is the president of which country, कौन से मुल्क के प्रेसिडेंट है, वो मुल्क कहां पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में, go and find out. Yes, the second one is चंद्रिका प्रसाद संतोखी, very good. आतिका माही, right, मोहम्मद इरफान अली एंड चंद्रिका प्रसाद संतोखी। हाँ, तो ये दोनों एक चीफ गेस्ट थे फर्स्ट वाले, सेकंड वाले जो थे स्पेशल गेस्ट थे, ये दोनों प्रेसिडेंट कौन से कंट्री के, सो बोथ आर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यू शुड गो एंड फाइंड आउट बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप जरूर से देख लीजिएगा क्लास सेशन, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्केट, यस, ओके। एंड अगेन पेज नंबर 12 में जोशी मत रेसिडेंट अपोज रेजिंग डिमांड हायर रिलीफ पेमेंट, रेजिंग मतलब बुलडोजर से गिरा देना, सो demolishing by bulldozer because the cracks have happened, so the government has ordered to demolish, but they are protesting कि they should be given high payments, मतलब compensation दिया जाना चाहिए और ज्यादा देना चाहिए compensation, so they are not satisfied with the compensation and all, तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, अगर मेरा मकान गिरा जा रहा है तो हमको compensation देना चाहिए and all. So इसके बारे में I have discussed already yesterday के सेशन में, इसके सेशन में 9th जनवरी, ये तो 10 जनवरी का ना, 9th जनवरी के सेशन में वी हैव डिस्कस्ड इट, ठीक है, ये 10 जनवरी का, सो इन 9th जनवरी सेशन आई हैव डिस्कस्ड अबाउट जोशी मत एंड ऑल, 9th जनवरी के सेशन में द हिंदू एनालिसिस, प्लीज गो एंड वॉच इट, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, यस, आतिका माई, वेरी गुड। प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना इज मोहम्मद इरफान अली एंड प्रेसिडेंट ऑफ सरीनेम इज चंद्रिका प्रसाद, यस, आतिका माई, राइट। So this is all about today's class. Please subscribe to our channel. Follow us on Instagram, Facebook, Telegram. Download the BYJU'S exam prep app. This is all about today's class. Thank you, everyone. Thanks for watching. Have a nice day.